हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर प्रोफेसर एक्स। आज हम अप्रोचेस कल या परसों हमने कंप्लीट किया था इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और अब हम अप्रोचेस से स्टार्ट करना है हम लोगों को। अप्रोचेस से स्टार्ट करना है। ट्रेडिशनल अप्रोच और नॉर्मेटिव हिस्टोरिकल अप्रोच, फिलोसॉफिकल अप्रोच है ना। फिलोसॉफिकल अप्रोच, फिलोसॉफिकल प्रेजेंटेशन, हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, ये सारी चीजें देखनी है। आज हम कहाँ तक करेंगे देखते हैं। लीगल इंस्टीट्यूशन बाद में मॉडर्न तक हम करते हैं। आज मॉडर्न तक हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मॉडर्न मॉडर्न माने लीगल इंस्टीट्यूशंस तक हम कंप्लीट करते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या हम कर पाते हैं आगे। ठीक है, ये पार्ट 2 रहेगा पॉलिटिकल थियोरी मीनिंग एंड अप्रोच में। प्लीज गाइस, जितना हो सके उतना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे काफी सारे यूपीएससी स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। और मेरा एम भी है वैसे तो, नॉट सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट बट ऑल्सो कॉमन पीपल को भी समझ आए, इसीलिए मैंने यूपीएससी फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। क्योंकि मेरा मानना है, जैसे दिव्यकीर्ति सर का भी मानना है और मेरा भी वही मानना है कि ना, यूपीएससी सिलेबस सभी को एक बार ना प्रिपेयर करना चाहिए, चाहे उसको एग्जाम देना हो या ना देना हो। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। सेकंड बार रिवाइज करें हम क्वेश्चन, ठीक है। पीवाईक्यू, examine the importance of behavioral approach in political theory. What led to its decline? Discuss significance of normative approach to political theory. Comment on resurgence of political theory. Decline of political theory. Post behavioral approach, उस पे कमेंट करना है। Comment on political theory is not a escape mechanism but arduous calling. Difference between normative and empirical theory of politics. Politics. Difference between normative and empirical theory of politics. हम आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें ना आ जाएगी। ठीक है, ये सातों के सातों क्वेश्चन देख लिए हमने। वो हम स्टार्ट करते हैं अप्रोचेस से। क्या कहने चाह रहे हैं अप्रोचेस? अप्रोचेस किस लिए डेवलप किए जाते हैं? ठीक है, अप्रोचेस किस लिए डेवलप किए जाते हैं ये समझाया इसमें। Approaches refers to particular perspective or methodology used to study political phenomena. Approaches to political science are ways to thinking and conducting research that help scholars to understand political process and events. These approaches can take different form and be used for different purposes. Some approaches focus on understanding behavior of individuals and groups within the political system, while others seek to establish normative standard for evaluating political system. Still, others focus on analyzing structure of feature of political system and how they shape political behavior and outcomes. By using different approaches, political scientists can develop more comprehensive understanding of political phenomena and contribute to development of theories and concepts to help us to better understanding of world around us. ट्रेडिशनल और नॉर्मेटिव अप्रोच, ठीक है, ये किस पे फोकस ज्यादा करते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस refers to long standing and established way of studying politics that have been developed and refined over times. These approaches are based on different theoretical perspective and methodology, and they seek
to explain political phenomena through various lenses. Approach. What is traditional approaches? Approach. Traditional approach. Historical, legal institute, philosophical approach. इससे बनता है traditional approach. ये सारी चीजें ना आती अभी आएंगी. ये तीनों पढ़ने में आएंगे. पहले philosophical approach को देखते हैं. This method tells what to study and how to study. Examining the political concept, institutions, practice through the philosophical lens, this approach seeks to understand the normative fundamental of politics, that is, what just right and moral acceptable in political life. In other words, value preference by typically associate with the philosophical approaches and the moral and logical premises are emphasized. This method is predicated on the idea that values are necessarily and unavoidable for assessing political occurrence. The classical political philosophers are interested in balancing liberty and duty and defending moral principles. In contemporary times, the scholars like Leo Strauss, Dante Germino, John Plemednitz support to philosophical approach. Plemednitz काफी बार ना प्रोनाउंसिएशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, चलिए आप समझ सकते हैं. स्कॉलर्स ऑफ फिलोसॉफिकल अप्रोच. प्लाटो हो गया, दांते जर्मिनो हो गया, लियो स्ट्रेस हो गया. अच्छा, लियो आपने देख रखी है लियो मूवी? लियो म्यू जाके देखिए, काफी सही बनाई है. नाम तो मुझे नहीं पता कौन सा एक्टर है, शायद थालापति उसकी सरनेम है. थालापति नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जाके देखे एक बार, बहुत सही है. हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कौन है एक्टर. एक्टर का नाम क्या है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. चलिए आपका होमवर्क है ये आज. प्लाटो. प्लाटो का कोट क्या है? फिलोसॉफी इज सोर्स ऑफ द मोस्ट नोबल एंड एडमायरेबल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन नेचर. इसका एक कोट है, कोट हमने ऐड किया. प्लाटो क्या एम्फसाइज करता है? Importance of knowledge and virtue in political life. He is he believes that states should be organized in a way to promote the common good, and the political authority should be of based on the rule of wise and in individuals. Virtue in individuals. प्लाटो ना हम आगे भी पढ़ने आएंगे, फिलोसॉफी थिंकर्स में आएगा प्लाटो. थिंकर्स में हम पढ़ेंगे प्लाटो अच्छे से. काफी सही आदमी था, मजा आया था इसको पढ़ने में मुझे तो. दांते जर्मिनो. दांते जर्मिनो एम्फेसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एंड एथिक्स इन पॉलिटिकल लाइफ. He believes that politics should be grounded in set of ethical principles such as honesty, integrity and justice. Honesty, integrity and justice. ये सारे ना एथिक्स की टॉपिक है, हमें पता है. एथिक्स में कोट कर सकते हैं हम इसको, दांते चर्मिनो को. He argued that the political leaders must hold high moral standard and they should be willing to act accordance with these values, even when when it is not politically expedient to do so. इसका कोट है ये. इसका कोट है, philosophy can provide critical analysis of value, assumption and concepts that underline political discourse and action. Political discourse and actions. Leo Strauss. Political science focused on the interpretation of political texts, the relation between the politics and philosophy, and the role of political philosophy in modern societies. समझे कि नहीं समझे? समझ आए कि नहीं समझ आया? आया कि नहीं? समझो. जॉन रोल्स आगे भी पढ़ने में आएगा, है ना.
जस्टिस में जस्टिस जस्टिस लीग John Rawls, widely credited with bringing back the philosophical approach to political science, is sought to provide normative theory of justice that was grounded in principle of political liberalism. Rawls sought to develop theory of justice that was not only intellectually compelling but also compatible with stand critical scrutiny and empirical testing. Theory of justice आएगा आएगा पढ़ने में बाद में आएगा. सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो. बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का. फीचर ऑफ philosophical approach. फीचर ऑफ द philosophical approach क्या क्या है? नॉर्मेटिव फोकस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रीजन, वैल्यूज, क्या क्या है? फीचर ऑफ philosophical approach. Normative. Philosophers approach The philosopher approach is normative in nature, which means that is a core-themed core ये भूल गया बाद में लिखने में core-themed with question of the out to be rather than what is. What is out to be rather than what is. समझे? It seeks to provide framework for thinking about principles, values, that should guided political actions, not to conceptual clarity. Philosophers who take a philosophical approach to political science strive for conceptual clarity in their work. They seek to define key concepts such as justice, freedom, equality, and develop rigorous and precise argument that can withstand critical scrutiny. Reason क्या है? Reason. Philosophers who take approach assume that the human beings are rational creatures who are capable to understand and analyze complex political concepts and ideas. They believe that reason is an essential tool for the understanding the nature of politics. काफी बार ना मुझे ये स्टेटमेंट गलत लगता है काफी बार खास करके इंडिया के कंटेक्स्ट में क्योंकि रैशनल इतने रैशनल होते समझने के लिए तो क्या इंदिरा गांधी के देहांत पे राजीव गांधी को 400 प्लस सीटें मिलती. ये क्या था? ये इमोशनल था, पूरा का पूरा इमोशनल. जो 400 सीटें आई राजीव गांधी को, पूरा का पूरा इमोशन से भरा हुआ था देश. इसी वजह से ना 400 प्लस सीटें आई, अदरवाइज नहीं आ पाती. अदरवाइज नहीं आ पाती क्योंकि ना अपनी माँ को खोया था इसी वजह से ना काफी बार अभी मोदी भी देख लो यार, काफी बार रोने लगता है, ये काफी बार रोने लगते हैं. ये वो हम देखते हैं. ये ना काफी इमोशनल इंटेलिजेंस से भरे होते हैं ये लोग. तो ना काफी बार इस कॉन्टेक्स्ट में ना मुझे गलत लगता है. ये अभी फिलहाल ट्रम्प पे गोली चली तो आप दे सकते हो. ये भी कहता है कि मैंने ना अमेरिका के लिए गोली खाई, मैंने अमेरिका के लिए गोली खाई. तो ये ना काफी बार इमोशनल चलता है मामला. काफी बार ना ये स्टेटमेंट मुझे गलत लगता है. लेकिन हाँ, वैल्यू. Philosophers who take philosophical approach assume that the politics is based on certain values such as justice, freedom, and equality. They believe that understanding these values is essential for understanding nature of political phenomena. Hmm. Values. Decline or criticism. Too much normative है ना. Imperialistics believes that political science should be based on empirical evidence. मतलब एक्सपीरियंस करो अपना, डेटा कलेक्ट करो, ये सारी चीजें ना उसको एनालाइज करो, क्या चीज है क्या नहीं चल रही है. जैसे हम वोटिंग पैटर्न देखते हैं इंडिया में, वोटिंग पैटर्न जैसे हम देख सकते हैं वोटिंग पैटर्न में काफी सारे डेटा आए. जैसे कहते हैं कि बीजेपी ना बीजेपी
अयोध्या में हार गए। अयोध्या जो कि विधानसभा सीट है, लेकिन फैजाबाद या फैजापुर, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। उसके जो डेमोग्राफी आप देखो ना, तो आपको पता चल जाएगा क्यों हारे। और वैसे भी ना, लल्लू सिंह मुझे जहां तक याद है 15-20 हजार वोटों से ये शायद जीत रहे थे वो, पिछले 2 टर्म में भी। क्योंकि उसकी जो डेमोग्राफी है वो ही उस तरीके की है कि आप समझ सकते हो। जैसे एस सी एस टी की शायद 24 या 25% पॉपुलेशन है। और मुस्लिम कम्युनिटी की मुस्लिम कम्युनिटी की शायद 40%, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 40% है। तो सारा कुछ मिला के ना आप देखोगे, मायावती ने भी इस बार ना चुनाव नहीं लड़ा था, मायावती इस बार देखी ही नहीं थी। तो आप सारा कुछ ये मिला के देख सकते हो कि ना, बीजेपी इसी वजह से। और प्लस लल्लू सिंह ने बोला था कि ना, हम संविधान को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे 400 प्लस सीटें आई तो। हालांकि 400 प्लस संविधान बदलने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए, आई थिंक 400 प्लस नहीं, शायद 350 प्लस या 350 भी काफी होती है संविधान को बदलने के लिए। और जो एनडीए के पास पिछली बार थी 2019 के बाद से थी। तो ये सारी चीजें ना चलती है पॉलिटिक्स में। तो टू मच नॉर्मेटिव है ना, lack of practical analysis. It was seen that the philosophical approach lacked the analysis to predict the courses of political activities evidence. It lacked a practical and universal application and was termed as armchair theory. Armchair theory. ये ना आगे आएगी, पढ़ेंगे हम। Fragmentations. Fragmentations of political science into subfields such as comprehensive politics, international relations, public policy has also contributed to decline of the philosophical approach. These subfields tend to focus on empirical analysis and specific policy issues rather than normative inquiry. Hmm. समझे? बुझे? Other limitations. There is a possibility of discontinuity between the real world and the world of ideas and biased conclusion, जो नॉर्मेटिव वाले थे ना। प्रेजेंट स्टेटस क्या कहता है? Once a philosophical approach was in the state of decline but now in the state of revival. Hmm. The theory of John Rawls, Ronald Dworkin, Amartya Sen, Martha Nussbaum can't be rejected simply as a speculations. There is also revival in Marxist political theory in form of critical schools. At the present, postmodernism, postcolonialism, Frankfurt School's phenomenology are some of the dominant philosophical prospectus. अब चलते हिस्टोरिकल अप्रोच पे। The closeness of history and politics can be understood through the statement like politics is present history, history is the past politics, and politics is a root and history is a fruit. वाह, पॉलिटिक्स इज रूट एंड हिस्ट्री इज फ्रूट। वाह, क्या चीज है वाह यार, काफी सही स्टेटमेंट है। काफी मतलब जेएस में ये वो सारी चीजें में लिख सकते हो आप, और इंट्रो में भी ये चीजें डाल सकते हो आप, है ना। The historical approach to political science is method of studying politics that emphasize the importance of historical context, institutions, and tradition in shaping the political outcomes. This approach assumes that the political phenomena are deeply embedded in historical circumstances and cultural practices of particular society. The historical approach seeks to understand the political process by examining their evolution over time and by tracing the ways in which they have been influenced by historical events, institutions, and traditions. These approaches involve detailed
empirical research into the historical context, political phenomena, and include the social, economic, and cultural factors that have shaped them. स्कॉलर कौन कौन से है? थ्यूसिडाइड्स है, मैकियावेली है, सेबाइन है, लास्की है ना? पढ़ना है थ्यूसिडाइड्स। ये चलते हैं आगे, फीचर्स को देखते हैं। नहीं, चलो पढ़ा ही देता हूँ। स्कॉलर्स थ्यूसिडाइड्स में he believes that the political outcomes are shaped by historical events, institutions, and traditions. He emphasizes the importance of understanding historical context in order to understand political process and outcomes. एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं he examined the rise of Athens of hegemonic power in ancient Greece as well as the causes of Peloponnesian War, drawing on historical examples and cases to illustrate his point. Machiavelli can be considered as an exponent of the historical approach to political science. His framework, the Prince, his famous work, sorry, not framework, हाँ, मेरा ना दिमाग घूम गया अभी, रात के 10 बज रहे हैं, मैं थका हुआ हूँ पूरा का पूरा। चलिए, ये सारी चीजें ना बात करनी होती है। His famous work, The Prince, is classical example of historical analysis of political phenomena. In The Prince, Machiavelli examined the political struggles, events of his time, dwelling on historical examples, cases to illustrate his point. Sabine. Sabine. Sabine's approach is grounded in his belief that political process and institutions are shaped by historical events and traditions. He argued that in order to understand the political outcomes, it is necessary to study the historical context in which they emerged. He considered historical method as the most relevance method. Most relevance method. Its strength is simplicity. He calls it common sense based on approach. एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं he examined the origin of democracy in ancient Greece and the development of constitutionalism in medieval Europe to understand the historical root of the modern political institute. Lasky, Lasky, last की, ये लास्ट की है। अगर ताला खुला तो ठीक, नहीं तो रूम में बंद हो जाओगे आप। खतरों के खिलाड़ी। कौन कौन देखता है खतरों के खिलाड़ी? मैं तो नहीं देखता। मुझे है ना बोरिंग चीज और ये मतलब पूरा का पूरा ना स्क्रिप्टेड लगता है पूरा का पूरा, तो इसी वजह से मैं नहीं देखता। ये सारी चीजें ना काफी टाइम भी वेस्ट करती है। ये सारी चीजें आप भी बंद करो, ऐसी ऐसी चीजें देखना। खतरों के खिलाड़ी हो गया, बिग बॉस देखना, बिग बॉस हो गया, काफी सारी चीजें ना चलती रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट देखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। लास्की Lasky has supported the historical approach and also stated that every thinker is child of his time. Every thinker is child of his time. In the other word, the political thought is always shaped by the present and the historical factor in shape through of the scholar. Every thinker is child of his time. शायद प्लाटो को या मैकियावेली को, मैं भी भूल रहा हूँ। मैं एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ चीजें। चलो पढ़ते तभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको ये चीज को नेक्स्ट पढ़ाई में है कि प्लाटो या शायद मैकियावेली में शायद आता है। मैकियावेली चाइल्ड ऑफ हिज टाइम ऐसा कुछ आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। फीचर्स emphasize on historical context. The approach emphasizes the importance of studying the historical context in which the political event and institutions emerge. Historical factors such as traditional customs
and institutions are seen as the importance of determinants of political outcomes. एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं इंडिया में अफर्मेटिव एक्शन जो रिजर्वेशन के लिए दिया जाता है, ये चीजें देख सकते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था। कंपेरेटिव एनालिसिस, historical approach also emphasize the importance of comparative analysis, which involve comparing political phenomena across different societies and historical periods. By identifying similarities and difference between political systems, we can gain deeper understanding of the factors that shaped political outcomes. एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे अमेरिका में सिविल राइट्स हुए थे और साउथ अफ्रीका में सिविल राइट्स हुए थे, उसके क्या किया कंपैरिजन आप करके देख सकते हो, क्या क्या कॉजेस सिमिलर रहे और क्या क्या डिफरेंस रहे, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज, historical approach places the high value of primary sources such as historical document, speeches, and letters. These sources are seen as essential for understanding historical context, for gaining insight into the motivation and action of historical figures. Limitations क्या कह रहे हैं इसके? Limitations, ये सारी चीजें ना क्वेश्चन आप लिखते समय ये चीजें ध्यान में रखना। इंट्रो, इंट्रो में तो मैंने आपको स्टैंडर्ड लिखवा दिया, लेकिन स्टैंडर्ड के साथ साथ कोई स्कॉलर जोड़ लो, है ना, या कोई डेटा आया है अच्छा वाला ये जोड़ लो, कोई भी चीज है ना जोड़ लो। और सेकंड थिंग ये करना, जो बॉडी होती है बॉडी, उस पे ना मैंने इसी वजह से ना स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट पे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए, स्कॉलर्स के नाम दिए हुए इसी वजह से ना। तो बॉडी में आप कोई पॉइंट लिखो, उसके बाद नीचे ना उसका स्कॉलर या एग्जांपल्स या कोई भी चीज़ है डेटा है उस रिलेटेड चीज वो ना डाल दिया करो, जिससे आप आपके मार्क्स ना आराम से काफी ग्रोथ होगा उसका। ये तो नहीं बता सकता 3 से 6 होगा या 8 होगा या 10 होगा, 10 में से 10 तो नहीं आते, लेकिन हाँ अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो आराम से 12 या 14 15 आप ले सकते हो हमारे ख्याल से, है ना। मेरे 13 आए थे, इसी वजह से मुझे पता है 20 में से। तो आप ना ये सारी चीजें ना कंसिडर कर सकते हो और बाद में कंक्लूजन को आपको पता है कंक्लूजन का, तो कंक्लूजन क्या है सिखाना, है ना। हाँ, लिमिटेशंस ये डालने बॉडी में, प्रोज एंड कॉन्स में लिमिटेशंस। हिस्टोरिकल अप्रोच often focused on specific cases and context, making it difficult to generalize finding the other context. This can limit the applicability of historical researches to broad political questions. एग्जाम्पल के तौर पर हम लैंड रिफॉर्म इन वेस्ट बंगाल इम्प्लीमेंटेड बाय द लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, ये सारी चीजें ना, ये चीजें नहीं लिखनी, मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ये सारी चीजें ना मत डालना, मोटा मोटा आपको जानकारी मिले कैसे लिखना है कैसे नहीं, इसी वजह से मैंने डाला है। पार्टी का नाम आए ये सारी चीजें ने मैंने एग्जाम्पल में ये भी शायद डाला हुआ है, बीजेपी ये वो वगैरह, लेकिन ये सारी चीजें नहीं डालनी है, खास करके बिगनर्स के लिए तो मैं खास करके बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड रिफॉर्म इन वेस्ट बंगाल इम्प्लीमेंटेड बाय लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट इन 1977 to 2008 to provide insight into the impact of land distribution on rural development. However, the unique political and socio-economic context West Bengal make it challenging to apply this finding to other state or region, है ना। Historical biases. The historical approach can be influenced by the researcher's own biases and interpretation of historical events. This can result in selective reading of historical data and potential distortion in analysis. ये सारी चीजें ना हम देख सकते हैं, काफी सारे हिस्टोरियन अलग तरीके से झुके होते, काफी सारे हिस्टोरियन इस तरफ झुके होते हैं। तो आप देख सकते हो हिस्टोरियन ही नहीं, मतलब न्यूज़पेपर में भी आप देख लो, कोई लेफ्ट विंग का होता है कोई राइट विंग का होता है, हालांकि मैंने गलत कर दिया, ये लेफ्ट विंग और ये राइट विंग हो गया। तो ऐसी चीजें ना चलती रहती है, तो ये बाइसेस तो ना
कोई किसी भी चीज में आपका रहता है बायसेस, आप पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं रह सकते। 100% आप न्यूट्रल किसी भी चीज में नहीं हो सकते, चाहे मेरी पॉलिटिकल व्यू क्या हो, आपके पॉलिटिकल व्यू क्या हो, कोई भी चीज है, न्यूट्रल रहना। सब्जेक्टिविटी तो आ ही जाती है ना, चाहे पेपर चेकिंग के लिए देख लीजिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का आप रिजल्ट ही देख सकते हो, क्या डिफरेंस रहता है उसमें। तो ना, सब्जेक्टिविटी हर चीज में बायसेस थोड़े बहुत रहते हैं अपनी तरीके से। The historical approach can struggle with establishing causal relationships between historical events and political outcomes. This is because multiple factors can contribute to a particular outcome, making it difficult to isolate specific causes. Difficulty in prediction the future. Future की prediction में historical approach focusing on past events may not provide the clear basis for the prediction of future outcomes. This can limit utility of historical research in guiding policy decision or prediction of political outcomes. ये एक तरीके से काउंटर भी मैं इसको करता हूँ और एक तरीके से मैं इसके साथ भी चाहता हूँ। चलिए, ये तो मेरा मानना हो गया, आपकी चीजें अलग है और ये आपके सोचने का तरीका अलग है, तो इस लेकिन ये मेरे सोचने का तरीका है, दोनों तरफ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है। तो एक सिक्के के दो बाजू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से मेरा भी सोचना, वही दो ही तरीके होते हैं। दो साइड से मैं देखता हूँ हर बार, है ना। चलिए, प्रेजेंट स्टेटस क्या है। एट द प्रेजेंट there is a revival of interest in study of classics. At the present, form of the historical approach known as the contextual approach has developed. अब contextual approach क्या है, क्या बिलीव करता है? Believes that there is a need to understand the context, and it it's not possible to understand the entire meaning without understanding the context. Without understanding the context, contextual approach बहुत इजी है याद रखना, इसको ना एक पॉइंट में लिख लेना। Legal institutions. The term legal approach refers to effort to analyze political from a legal perspective. It focuses on legal and constitutional framework that different government organs must operate within, as well as power and procedures that gives rise to legitimacy of these activities. एग्जाम्पल के तौर पर लीगल अप्रोच इन इंडियन पॉलिटिक्स will examine legal ramification of various constitutional provisions as interpreted by the Supreme Court of India, and the formation process and legal standing of Lok Sabha and Rajya Sabha and the state legislative assembly, the election process, and the power and positions of the president, prime minister, and government. ये सारी चीजें ना मैंने आपके लिए समझाने के लिए डाली है। प्लीज इसको पॉइंट आउट करिए और इसे कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करिए, क्या क्या चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। काफी मेहनत लगती है टाइपिंग करना, है ना, इसके एग्जांपल्स ढूंढ ढूंढ के डालना, और तीन तीन मटेरियल्स में इकट्ठा करके डालना, ये सारी चीजें ना काफी टाइम लगता है। तो प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए। स्कॉलर्स कौन कौन से? आइवर जेनिंग्स, कार्ल लेव लेव लेवलिन, केसी वेयर, Ivory Jennings. He emphasized the importance of legal institutions, particularly in judiciary, administrative agencies, in shaping legal outcomes and the uh, upholding the rule of law. इसकी बुक द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन 1933 इसकी बुक है आइवरी जेनिंग्स की। कार्ल लेवेलिन, American legal scholar who is often credited with helping to develop legal institutional approaches through his work legal realism on legal realism and role of legal institutions in shaping the legal outcomes. एग्जाम्पल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, सुप्रीम कोर्ट judicial activism in Supreme Court been work has been known for its judicial activism, where judges have
used to discretion to shape legal outcomes, often influenced by institutional context. For example, case of Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation. In court, they recognized the right of livelihood as a part of a right to life, and demonstrating how judges can use legal rules and achieve desired social outcomes. हम्म ये ना ओल्गा टेलिस शायद पॉलिटी में दी रखा है लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ लेना ठीक ठाक से या तो गूगलेश्वर में जाके पढ़ लेना कैसी वेयर according to Ware's legal institutional approach, federalism is defined by the institutional structure of the government, which established by the constitution that allocate the power between central government and the constitutional unit. In this approach, constitution is seen as a legal framework that provides the foundation for the distribution of power and responsibility in federal system. सेंट्रल स्टेट रिलेशन आप देख सकते हैं आप तीन तीन सूची देख सकते हैं सेंटर की ये चीज है स्टेट की कंकरेंट है ना ये तीन सूची ये भी आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं फीचर्स स्टडी ऑफ स्टेट फोकस ऑन लीगल रूल्स एंड नॉर्म्स importance institutional design attention of formal procedures study of state. This approach useful while comparing the political system of different states. Thus its utility is more comparative analysis of government and state structure. Example के तौर पर comparing federalism in India and USA. Focus on legal rules and norms. A legal institution approach places a strong emphasis on legal rules and norms as a basis of analyzing understanding legal system. This includes constitutions, status, court decision, and other legal instruments shape the distribution of power and responsibility within the system. Example: Supreme Court play a crucial role in interpreting constitution and shaping the country's federal structure. For instance, the court decision in cases like S.R. Bommai versus Union of India 1944 and Kuppettaswamy Union of India 2070 have clarified the power of the central government versus state government, establish the importance of federal balance. चेक्स एंड बैलेंस ये शायद जीएस में 3 से 4 बार पूछा गया है शायद चेक्स एंड बैलेंस का क्वेश्चन चेक्स एंड बैलेंस का importance of institutional design. Legal institutions approach emphasize the importance of institutional design in shaping the functioning of legal system. These include distribution of powers between different branches of government, the structure, court, and the other legal institutions, the role of administrative agencies and bodies. Attention to formal procedure. Legal institution approach places the high value on a formal process such as judicial review, rule-making process, and other mechanism for ensure that legal rules are followed and disputed are resolved on fair and impartial manner. Decline. Critic, critics of formalisms. Too formalistic, focus on too much on legal rules and norms and ignoring other important factors such as functioning of legal system, such as social norms, political culture, economic structure, political diversity. The approach could not holistically be applied unto all forms of government system, especially in the post-colonial world, where political institutions different with their Western counterpart. Post-colonial state. This state had a political system which was mixed
of traditional as well as formal Western structure. Thus, sociological and economically approaches were also needed to understand political dynamics. Example के तौर पर princely state during the British colonial era, this state like Mysore, Hyderabad, Kashmir, traditionally monarchy but also adopt Western system administrative system. Rises of other approaches. Decline of the legal institution approach was also due part of rise of other approaches to study federalism and other legal systems, such as a new institutionalism, comparative constitutional laws, and critical legal studies. Change in legal system. Finally, decline the legal institutes approach may also be due to the change in legal system themselves. Hmm. May change in legal system themselves. As a global economy and political trend have led to erosion of national sovereignty and the rise of transitional legal regime, which may be more difficult to analyze using the traditional legal institution method. Present status क्या institutional in approach is in the state of revival and form of new institution is given to scholars like James March and James Olsen. New institutionalism emerged as a response to critique to traditional approach to understand human behavior in political and economical context. The desire to develop more nuanced and context-specific understanding of the way in which institutions influence behavior है ना ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है ना उसकी डेफिनेशन है ये ठीक है अब यहाँ तक रखते हैं मॉडर्न एंड एम्पिरिकल अप्रोच कल देखते हैं क्या क्या है इसमें एम्पिरिकल अप्रोच देखेंगे कल बिहेवियरलिज्म कल देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहेवियरलिज्म और पोस्ट हम्म ये सारी चीजें है पोस्ट बिहेवियरलिज्म ये सारी चीजें इन अब बहुत नहीं बचा है शायद 15-20 मिनट या शायद ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट का लेक्चर मेरे ख्याल से 25 मिनट का ज्यादा से ज्यादा लेक्चर बचा होगा तो कल हम वो देख लेंगे बाद में पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी हाँ और आप लोगों को ये बताना है कि लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जो सजेशंस है वो बताइए क्या क्या सजेशंस है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है ठीक है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए है ना ये तीनों चीजें करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए क्योंकि मैं आपको वैल्यू पहुंचा रहा हूँ ये सारी चीजें ना फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ आपको 50,000 60,000 देने की जरूरत अब नहीं है और हाँ दूसरी चीज अगर आप लोगों को किसी को हिंदी मीडियम से है कोई स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताए कि मैं अकेला हिंदी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ मैं उसके लिए भी एफर्ट लगाऊंगा और ये सारी चीजें ना हिंदी में भी मैं पढ़ा दूंगा ठीक है तो ये सारी चीजें हिंदी मीडियम वाले हो तो बेफिक्र आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे अच्छी वाली है ना तो चलिए पढ़ते रहिए खुश रहिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है बाद में हम पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ेंगे ठीक है योर प्रोफेसर एक्स